Question number 51 Kandala. If a function f is measurable, then mod f is always measurable. Mod f is bounded but not measurable. F may be measurable subject to some condition. Then f should be limit to a sequence of function. The recall a function f from a to extended real plane R union infinity union minus infinity is measurable if x belongs to a such that f of x greater than alpha is measurable. तो ये a रो गोटे सबसेट देखुछु जेने की हमर सेट टा काइबा मेजरेबल होतबा से कंडीशन हम कहू फंक्शन टा मेजरेबल. तो हम थ्योरम काम पढ़े ना इफ f is measurable then mod f is always measurable. केंदा यदि x belongs to a mod f of x greater than alpha नला तो यदि अल्फा लेस देन 0 होला तो हमको a रो सब एलिमेंट बिलोंग्स करबे तो होला a यदि अल्फा टा हमर ग्रेटर देन 0 हिला तो mod f रे हमको के बिलोंग्स करबे x belongs to a such that f of x less than alpha x belongs to a such that f of x less than minus alpha. तो बाय डेफिनेशन जेहेतु f मेजरेबल ई पार्ट भी मेजरेबल और मैं प्रॉपर्टी पढ़थला ई पार्ट भी मेजरेबल. तो ई टोटल फंक्शन टा हमले होला measurable. It is measurable, it is measurable. Hence, both the set on right hand sides are measurable. Hence, mod f is measurable. The answer is option A. The not measurable false. Subject may be measurable false. And f should be a limit to sequence of function. The limit to sequence of function like I am definition if fn is a sequence of measurable functions then fn converges to f is measurable but converse is not true. तो converse true नहीं तो option B भी false गला है ना. क्वेश्चन लाना fn converges to f and then measurable हो जाए. तो हम पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी का ना limit inferior fn और limit supremum fn is equal to f है कहीं converges तो जाए fn converges to f. तो बाय प्रॉपर्टी यदि f measurable हो जाए तो limit fn भी measurable limit infimum be measurable. Hence f is measurable. Question number 52 Bandala. In the definition of a Riemann straight-edged integral given by a to b fx d alpha x, the function alpha x for x belongs to a b must be a continuous function, monotonically decreasing function, monotonically increasing function, and option D differentiable function. तो हमको क्वेश्चन पूछा हमको रीमान स्ट्रेटलाइज इंटीग्रल का डेफिनेशन है. तो रीमान स्ट्रेटलाइज इंटीग्रल का नाम और जस्ट जनरलाइजेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल. तो जो रीमान इंटीग्रल जनरलाइजेशन करता आमे अल्फा नउजु ये अल्फा को हम एज्यूम करथला जे अल्फा मस्ट बी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ab and alpha should be monotonically increasing on closed interval ab for b greater than a. तो ये हम पूछ रहे alpha should be monotonically increasing. The answer of हमारे option C. Alpha should be monotonically increasing function. और ये डिफाइन करमा स्ट्रेटलाइज इंटीग्रल को केंदा करथला जे पार्टीशन 3 होथला a = x0 x1 x2 xnb of ab हमको जे इंटरवल देइथबा से इंटरवल गोटे पार्टीशन होथला और पार्टीशन में डिफाइन करथला ना del alpha I is equal to alpha of xi minus alpha xi minus 1 such that del alpha I greater than 0. जेहेतु हमें अल्फा को ऑलरेडी एज्यूम कर जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो ये del alpha I greater than 0 होगा. तो सेंटर में यदि अपर डायलॉग सम डिफाइन करमा upf alpha is equal to summation mi del alpha I where mi is the supremum of f on del xi and lpf का लगाना lower sum डिफाइन करना summation small mi del alpha I small mi डाला infimum on del alpha I. तो तापमान में कहा अपर इंटीग्रल डिफाइन करना a2 minus b f dx is equal to infimum of upf alpha. तो अपर सम मान कर infimum एटा केते पॉसिबल होतला हम जेते नॉर्म p को लेस देन जाता है पार्टीशन होता है पार्टीशन लेंथ छोटा कर दोतला. सिमिलरली लोअर इंटीग्रल में डिफाइन करना minus a to b f dx is equal to supremum of lpf
एई केस रे भी सुप्रीमम पाइबाली है आरे हमें सुप्रीमम पाइबा नले नॉर्म p को लेस देन टेंड्स टू 0 कर दोतला तो रिमान इंटीग्रल केते होतला जेते अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल होतला तो हमें से टाइप ने का होतला दैट फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल तो क्वेश्चन हमको डेफिनेशन बेस्ड पूछ रही है नंबर 52 रे क्वेश्चन नंबर 53 हम काम पचरेथला if f is a non-negative measurable function such that integration of f dm is equal to 0 then f is a constant 0 everywhere a periodic function 0 almost everywhere तो हम जितने लेवल इंटीग्रेशन पढ़ुतला सेने गोटे प्रॉब्लम सॉल्व करथला ना if f is non-negative measurable function then f is equal to 0 almost everywhere if and only if f dx is equal to 0 यदि ई कंडीशन होतला जे ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 होतले ई कंडीशन होतला और ई कंडीशन होतले ई कंडीशन होतला तो बाय दिस थ्योरम हमर लगे हला ऑप्शन डी हला ट्रू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर यदि ई थ्योरम इज एन प्रॉब्लम प्रूफ को देखमा तमे का होतला लेट f is equal to 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर फर्स्ट एज्यूम करला तो गोटे फाइ गोटे सिंपल फंक्शन नला सच दैट फाइ इज लेस देन f तो जेते फाइ लेस देन f होचे तो हम कहि परा इंटीग्रेशन ऑफ फाइ dx इक्वल टू 0 अब बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल लेवल इंटीग्रल हम कहां पे ना इंटीग्रेशन ऑफ f dx इक्वल टू 0 तो यदि ऑलमोस्ट एवरीवेयर 0 सेट आउतला क्वेश्चन हमको बचले कन्वर्स पार्ट इफ f dx इक्वल टू 0 तो हम गोटे सेट e न लगाना x such that f of x greater than 1 by n तालिका लगाना that integration of f dx is greater than n inverse chi e है हमारा characteristics function तो is equal to chi e का नाम measure of en और बाकी जन सेट में नहीं चू ई मेजर हला 0 सो मेजर ऑफ en हला हम लगे 0 हवा कथा जे f dx is equal to 0 दीजिए बट हम यदि देखा x greater than f of x greater than 0 का यूनियन आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ en so it arbitrary union भी और en में पाउछ 0 तेनु कहि पला f is equal to 0 almost everywhere सिंपल जे प्रॉब्लम सॉल्व करथवा तो आंसर दे परबा आंसर ला ऑप्शन डी so question 54 का अंदला for metric space x with metric d the map phi from x to x is a contraction f x for xy belongs to x d phi x phi y is less than c dx dy with finite positive c in the for real c greater than 1 option c the 0 c to 1 option d with real c greater than 1 the simple and अंको ने contraction or definition पूछ रही है the recall contraction mapping the function phi from x to x is called contraction map if for xy belongs to x d of phi x phi y is less than k dx dy where k is belongs to 0 to 1 0 to board और 1 की कंडीशन है हमें बोलूंगा contraction mapping तो by this हमारा ऑप्शन सी तो पर्टिकुलर हम यदि k 1 नहीं होता तो वो लगाना लिप्सिच कंडीशन Question number 55 andala a real valued function defined on a measurable space is called a simple function if the domain of the function is finite, the range of the function is finite, measurable space is a vector space, function is a contraction map. तो सिंपल हमको डेफिनेशन बचा जुकार सिंपल फंक्शन ला तो सिंपल फंक्शन का होता है फंक्शन f from a measurable set e to r is called simple function if there exists a finite disjoint class e1 e2 en of the measurable set e with union of ei ala e and a finite set a1 a2 an such that f of x is equal to ai for all x ei for I 1 to less than n तो यदि हमें गोटे
हमको मेजरेबल सेट दला ताको हमें डिस्टिंक्ट इंटरवल ले डिवाइड करला ताको ना दला e1 e2 e3 कंटिन्यू तो ये डिस्टिंक्ट इंटरवल ले जब फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नेला तो हमें ताको होजुगा ना सिंपल फंक्शन तो इतकी डेफिनेशन हमें को होजुगा ना द रेंज ऑफ द फंक्शन शुड बी फाइनाइट द आंसर वा ऑप्शन बी होजुगा द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फाइनाइट नॉट नेसेसरी हमें क्लोज इंटरवल ए बी नेला क्लोज इंटरवल भी करना मेजरेबल और इतना हमें डिस्टिंक्ट यूनियन ने भी लिखी परमा तो ऑप्शन ए फेल मेजरेबल स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस ये ऑप्शन ना 2 मेजरेबल स्पेस टा वेक्टर स्पेस 2 कने हम जेकर फंक्शन ने होता ए पाव जी मेजरेबल एफ जी मेजरेबल और एफ जी भी हम लगे मेजरेबल होतला तो मेजरेबल स्पेस इज वेक्टर स्पेस ट्रू ऑप्शन बाकी सिंपल फंक्शंस के रिलेशन ना तो એટલે ऑप्शन सी टा डिलीट होला तापर फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग तो इन क्वेश्चन आए हो ना उठा जो फंक्शन वाले कॉन्ट्रैक्शन हो खाली डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट जगह जति मुई इंटरवल गुटे आले लेस देन एप्सिलॉन वैल्यू भी वैल्यू टा जदि d f of x f of y को हमें लिखि नहीं पारू k d of x ई हिसाब रे तरीका रे हमें लिखि नहीं पारू तो ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग फेल मारला तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल फंक्शन हम लगेगा ऑप्शन बी the simple function was na fx such that summation I 1 to L ai xai xa where x or chi is the characteristics function. The simple definition based procedure answer ala option B. Question number 56 andala the series summation n plus 1 to the power 1 by 3 minus n to the power 1 by 3 is convergent, divergent, oscillatory and a power series. तो यदि हमें सीरीज टा को ध्यान देके देखना एटा काई सीरीज टा दिसचे बरे टेलीस्कोपिंग सीरीज टा दिसचे तो हमें यदि पार्शियल सम बार करना nth पार्शियल सम तो हम कहला ये देखमा a1 डाला 2 to the power 1 by 3 minus 1 a2 डाला 3 to the power 1 by 3 2 to the power 1 by 3 कंटिन्यू कहले के तो ये काम हो जाए फर्स्ट टा और तर सेकंड टर्म सिमिलरली इधर फर्स्ट तर सेकंड टर्म तो ये कटी कटी जाउजे तो ये टाइप ऑफ सीरीज को हम काम करतला टेलीस्कोपिक सीरीज तो बचला ना फाइनल होगा n to the power 1 by 3 minus 1 which tends to infinity तो हम कहला सीक्वेंस ऑफ partial sums are infinity वाला तो hence the sequence is divergent तो option B option B. Question number 57 हम कहला if fn is a monotone increasing sequence of non-negative measurable function from s to r then integration of fdm is equal to limit n tends to infinity fdm. This theorem is known as bounded convergence theorem, dominated convergence theorem, monotone convergence theorem, monotone measure theorem. बेटा क्वेश्चन में जाना पड़े जेको गोटे मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस देछे आंसर बा ऑप्शन सी तांगो मोनोटोन convergence theorem का कहूचे let a be any measurable subset of ab with finite measure and fn be a sequence of measurable functions such that for x belongs to a 0 greater than f1x f2x operator तो इने जे नागो सीक्वेंस टा दउचे सीक्वेंस टा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग plus non-negative. Then, यदि limit n tends to infinity fnx is equal to fx ला, तो कहाँ point वाइज यदि converge करला, ताहले कहाँ ला limit n tends to infinity a fn dx is equal to f dx. तो sequence का series पढ़तला, हमें ये condition satisfy लेगा करवाले कहाँ कोतला, जे fn टा मोर uniform convergence हवा दरकार था. ये ना में uniform convergence देखने के लिए कहाँ करना, जे function टा वाले monotone हाउ कहाँ होचे नॉन नेगेटिव तो बाय डेनिस थ्योरम ऑटोमेटिकली फंक्शन ना काइबा यूनिफॉर्म करले चाहिबा तो सेटा छाड़ हमने मोनोटोन करने थ्योरम ता टूटा
जेतरा में इंटीग्रेशन करछू विद द हेल्प ऑफ हार्टस लेमरे सॉल्व करछू से बाउंडेड इनफॉर्मेशन जैसे हम कहला let fn be a sequence of function measurable on a measurable subset A of fb if the limit n tends to infinity fn x is equal to fx hela and there exists a constant m such that fn x less than m for all n যদি constant এথি possible हो जाए ताहले हम क्या करेंगे limit n tends to infinity fn x dx is equal to f dx सेम जिनिस हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन भी करथरा बाकी सेने हम कागना वेस्टर्स एंड टेस्ट करी फंक्शन को फास्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस करथना तो बेटा वाला ना आ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थ्योरम बोले ई जिनिसटा होल्ड करथला तो इनी डबल बना बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम सिमिलरली आ गुटे बचला डोमेन टू एफडीएक्स सेम जिनिस हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन भी करथना बाकी सेने हम कागना वेस्टर्स एंड टेस्ट करी फंक्शन को फास्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस करथना तो बेटा वाला ना आ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस थ्योरम बोले ई जिनिसटा होल्ड करथला तो इनी डबल बना बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम सिमिलरली आ गुटे बचला डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम तो डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम का होता ना जे हम गुटे नोतना लिमिट एक्स टू इंफिनिटी fn x इक्वल टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ab और प्राइस फंक्शन होता यदि हमको गुटे लेवेग इंटीग्रल फंक्शन g मिलुचे जेते लागी mod fn x लेस देन gx ऑलमोस्ट एवरीवेयर on ab पहला में the function f is level integral limit access to infinity a to b fn dx a to b इन जब हमें रियल ला दिखता है तो सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन है तो आपको फास्ट मामला यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखा था तो लेवल इंटीग्रल है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस रा यदि fn x converges to f almost everywhere और ये कंडीशन सैटिस्फाई फंक्शन रा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर है ये तो हेंस ये कंडीशन सैटिस्फाई ये डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम प्रूफ टा भी हमें फाटा समारोह हेल्प रे प्रूव करथला आउडे सिने पड़ना इन गान देखिए मोनोटोन मेजर थ्योरम इन थ्योरम पीछे एग्जिस्ट नहीं करवा ऑप्शन दे दीजिए फिटेड कंदला the length of an arc of the curve y is equal to 1 minus ln cos x intercepted between x is equal to 0 x is equal to pi by 4 अगला वैल्यू दला तो हमको y का आदेश y is equal to 1 minus ln cos x तो नो y डैश हम कट पे लगाना minus 1 by cos x into minus sin x which is tan x तो हमें arc length तो हम लगाना पड़ता है arc length is equal to 0 to x 1 plus dy by dx whole square into dx तो हम y डैश लगाना tan x 0 to pi by 4 1 plus tan square x dx 1 plus tan square x ला हम लगे sec square x तो इंटीग्रेशन 0 to 5 by 4 is equal to sec x dx और sec x हो जाता है इंटीग्रेशन उसमें फॉर्मूला करना sec x रा ln sec x plus tan x 0 to pi by 4 वैल्यू पुट करना sec pi by 4 ला root 2 tan pi by 4 ला 1 ln root 2 plus 1 और लोअर लिमिट पुट करे sec 0 डाला हमारे 1 और tan 0 डाला 0 तो आउटर ln 1 is equal to 0 तो नेक्स्ट अपने हो जाना ln root 2 plus 1 तो hence arc length जे देखा हुआ l is equal to ln root 2 plus 1 तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 15 का था the value of 0 to pi by 2 sin x log sin x dx is log pi by 2 log e by 2 log 2 by pi log 2 by हमको पचे इंटीग्रेशन क्वेश्चन दीजिए मुझे ताको सॉल्व करला लेंगे सॉल्व कर ले शॉर्टकट मते नहीं दिसला कि शॉर्टकट जानो कमेंट में मैसेज कर दो तो दिसना 0 to pi by 2 sin x log sin x dx तो मुझे log वाला फर्स्ट फंक्शन sin x वाला को सेकंड फंक्शन रख ली आओ आइलेट को पेगी एक्सपांड कर ली तो फर्स्ट फंक्शन को बाद में log sin x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d log sin x by dx इंटीग्रेशन ऑफ sin dx into dx sin x रेट टू माइनस cos x तो मल्टीप्लाई कर ली और log sin x का डेरिवेटिव करना 1 by sin x डेरिवेटिव cos x और sin x रहा माइनस cos x माइनस माइनस निकाल देना प्लस तो वाला माइनस cos x log sin x प्लस cos x into cos x cos square x लिख ली 1 minus sin square x divided by
sin x dx equal to minus cos log x plus 1 by sin x लिखना cosec x और इधर minus sin x dx इधर minus cos log sin x cosec x का डेरिवेटिव वाला minus इंटीग्रेशन minus ln cosec x plus cot x जस्ट फार्मूला पकेली sin x तो minus cos plus cot x अब जल्दी लिमिट निकलना था 0 to pi by 2 दीजिए इधर pi by 2 को कमा cos pi by 2 0 तो 0 इन्हें cosec pi by 2 1 और cot pi by 2 वाला 0 तो ln 1 plus 0 ये भी तो ln 1 है कि नेक्स्ट टर्म को 0 दे दो और cos pi by 2 0 तो फर्स्ट अपर लिमिट जितने पकेला 0 वाला लोअर लिमिट जितने पकेला 0 पकेला ये कहला cos 0 ln sin 0 तो 0 तो ये भीतर कहाँ होचे फंक्शन दा अनडिफाइन है जाऊचे तो अनडिफाइन है जो हमें लेना लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos 0 तो 1 log sin x इस जगह में हम लिमिट पके दली सिमिलरली ln cosec x cot x इन्हें भी तो जब cosec x रो वैल्यू देखमा 0 रे इनफिनिट है जाऊचे तो अनडिफाइन तो इन्हें भी कहना लिमिट x टेंड्स टू 0 log cosec x plus cot x और cos x रहला 1 तो इन्हें ताऊ हमें लिमिटिंग वैल्यू पकेला मतलब बाय एल हॉस्पिटल लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin x लिमिट x टेंड्स टू 0 log cosec x plus cot x minus 1 तो ई पार्ट लिमिटिंग देता है log sin x और log cosec x into cot x तो कहला log a plus log b is equal to log ab तो मल्टीप्लाई है log sin x into cosec x into cot x और cosec x into cot x टा कहना 1 minus sin x plus cos x by sin x हमें इन्हें कहाँ करो sin x टे मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल है ये बात तो जब 0 होता है 0 ना हुए तब लिमिटिंग वैल्यू को क्या बोलना log 1 plus cos x cos 0 तो 1 तो ये बात ln अच्छा 1 plus 1 जब 0 को क्या तो ये ना log 2 और ई जाएगा ना -1 log 2 -1 और हमें 1 को आने को था log e तो पकेला log 2 minus log e is equal to log log 2 minus log e is equal to log 2 by e ये ऑप्शन है log 2 by e मैं एक मेथड में बदल देसला लिटिल बिट लेंदी यूज प्रॉपर इंटीग्रल और यदि के अलग मेथड सॉल्व कर पारो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो क्वेश्चन नंबर 60 का अंदर the value of integral -1 to n greatest integer x minus x dx is -1 to 1 0 तो हम उड़ा दीजिए greatest integer x minus x तो हम उड़ा कर दीजिए फ्रैक्शनल पार्ट रो नेगेटिव का दीजिए हमको इंटीग्रेशन कर ली बच दीजिए तो जो ना फ्रैक्शनल पार्ट रो हेल्प नहीं है कि -1 to 1 भीतर फ्रैक्शनल पार्ट रो हेल्प नहीं कि भी करी पड़ा और अगर हम कहाँ जाओ दिखा कर पावा -1 to 0 mod x minus x dx plus 0 to 1 greatest integer x minus x dx तो ये तो है -1 to 0 होता है हम greatest integer फंक्शन का मतलब -1 रिटर्न करता है तो ला -1 minus x dx और 0 to 1 भीतर होता है greatest integer फंक्शन वैल्यू वाला 0 रिटर्न करता है तो 0 to 1 minus x dx तो नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दमा minus x square to -1 to 0 डाला -x square to 0 to 1 वैल्यू पुट कर ली अपर लिमिट पकड़े 0 लोअर लिमिट पकड़ेगा हला -1 -1/2 इट मीन अपर लिमिट पकड़ लेला -1/2 लोअर लिमिट पकड़ला 0 तो कहाँ हला बचला कना -1 प्लस हाफ प्लस और माइनस माइनस प्लस हाफ माइनस हाफ कटी गला पहला -1 तो आंसर हला हम लगे ऑप्शन ए -1